Hello friends, in this video I will be talking about Standard 5 Investment Analysis Recommendation and Actions, and we will be starting with Standard 5A Diligence and Reasonable Basis. As the name suggests, diligence and reasonable basis. This is basically whenever you are recommending some stock or some security to your client, you should do your due diligence well and you should have a reasonable basis कि भाई why he should buy or sell this stock. This is all about that. First point, you must have a reasonable basis while making an investment recommendation. Consider the global and national economic conditions, firms' financial results, limitations of models used, etc. etc. Now, how do you study a stock? So you start with economic conditions. अगर आप top down approach use कर रहे हो, पहले economic conditions को study करेंगे. Then we find out which industry to invest in. फिर वो industry में कौन से sector में invest करना है, फिर उसमें कौन से company में invest करना है. This is the whole process. Now, while valuing this company, see, you have to decide whether it is undervalued, overvalued or fairly valued. ये valuation के लिए बहुत सारे models होते हैं जो आप equity के last chapter में पढ़ोगे. Every model has their limitations. The advantage भी होता है, disadvantage भी होता है. You have to take into consideration all these limitations of various valuation models. Everything, if it is perfect, then only you can recommend a buy or hold or sell to any of your clients. Second point, have a periodic review of the quality of third party research used. Third party research का मतलब क्या है? If you have lots of clients, you are an advisor. आपको clients को बताना है क्या buy करना है, क्या sell करना है. But you don't have a team. You go to a third party researcher. ये जो research करता है third party, वो बोलता है आपको कि हाँ Reliance को buy करना चाहिए. Then you will buy that research from a third party and you will package it to your client. You will disseminate that info to your client. So you should review the quality of that third party research also. Third party भले ही research दे रहा है, but you should also be sure कि हाँ ये quality compromise नहीं हो रहा है. Otherwise you will be unfair to your clients. And third point, be careful while using this information from external advisors. मतलब वही है third party या external advisors जो भी info देते हैं, be careful. Blindly सीधा आप third party से client को मत दे देना. Make some checks. थोड़ा due diligence करो, उसके बाद अपने client को दो. Next point, even if a member does not agree with the view of the group, he does not have to decline to associate with the report as long as there is a reasonable basis. इसका मतलब क्या है? If there is a group of say 10 analysts, 9 analysts are saying that they should buy Reliance, and if you say that you should not buy Reliance, you are not going with the consensus. 9 लोग कुछ बोल रहे हैं और 10th person कुछ अलग बोल रहा है. If the 10th person has proper reasoning why Reliance should not be purchased, तो वो अपने रिसर्च रिपोर्ट में नाम या साइन नहीं करेगा. वो नाम भी नहीं लिखेगा, साइन भी नहीं करेगा. अदरवाइज इट इज़ ओके टू राइट द नेम इवन इफ यू डोंट अग्री. बट अगर प्रॉपर रीजन है उसके पीछे, देन इट इज़ ओके, यू कैन डिक्लाइन. Last point, a firm must have written procedures that define adequate due diligence, review process, measurable criteria for judging the quality of research, etc. मतलब what is exactly adequate due diligence or reasonable basis? इसका मतलब क्या है? You should have proper reasoning behind your recommendation. अब ये Reliance को मैंने buy का recommendation दिया है. What is the reasoning behind it? And अगर reasoning में मैं ये बोलता हूँ कि ये जो economic conditions है वो अच्छा है, फिर industry, now if Reliance is in the petroleum industry for example, तो ये इंडस्ट्री भी अच्छा है, फिर उसमें रिलायंस हमको अच्छा दिखा. इफ़ आई हैव डन ऑल ऑफ दिस, तो दैट इज़ द लास्ट कैटेगरी. ये सबसे एडिक्वेट हो गया. बट इससे नीचे भी, लाइक फॉरगेट द इकोनॉमी, सीधा तुमने इंडस्ट्री से शुरू किया एंड देन यू गो ऑन टू रिलायंस, इवन दिस कैन बी कंसिडर्ड एडिक्वेट. सो योर फर्म मस्ट डिफाइन व्हाट इज़ एडिक्वेट एंड व्हाट इज़ नॉट. तो ये सारा पॉलिसीज़ वगैरह जो होगा, दैट फर्म मस्ट ऑलरेडी डॉक्यूमेंट इट and then you can apply this standard. Application.
let's start with problem 1. Helen Hawk manages the corporate finance department of Sarkozy Securities Limited. The firm is anticipating that government will soon close a tax loophole that currently allows oil and gas exploration companies to pass on drilling expenses to holders of a certain class of shares. Because market demand for this tax advantaged class of stock is currently high, Sarkozy convinces several companies to undertake new equity financings at once before the loophole closes. Time is of the essence, but Sarkozy lacks sufficient resources to conduct adequate research on all the prospective issuing companies. Hawk decides to estimate the IPO prices on the basis of relative size of each company and to justify the pricing later when her staff has time. Now understand, there is a company, for example कोई oil and gas sector में एक company है, उसको एक एडवांटेज है, एक टैक्स एडवांटेज है रिगार्डिंग ड्रिलिंग एक्सपेंसेस. कुछ तो भी ऐसा है कि ड्रिलिंग एक्सपेंसेस वो एक सर्टन शेयर होल्डर्स के क्लास को ट्रांसफ़र या बोलते पास ऑन कर सकते हैं, उससे उसका टैक्स बचता है. तो ड्रिलिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखेगा एंड प्रॉफिट कम दिखेगा और टैक्स बचेगा. बट टैक्स लूपहोल जो है वो क्लोज होने वाला है, मतलब अभी से ये टैक्स सेविंग नहीं होने वाला है आगे जाके. टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, हेलन हॉक इज सजेस्टिंग कि आप नया इक्विटी इशू कर दो ताकि बहुत सारे और शेयर होल्डर्स बन जाए एंड देन यू विल टेक दैट टैक्स एडवांटेज ऑन दीज ड्रिलिंग एक्सपेंसेस. अब नया इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आईपीओ लाना पड़ेगा और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग और सेकेंडरी ऑफरिंग वट एवर यू कॉल इट. अब उसके लिए इशू प्राइस सेट करना है. सी वेन एवर देयर इज एन आईपीओ, ये आईपीओ का कुछ तो भी पर शेयर का प्राइस होना चाहिए. नाउ रिगार्डिंग दैट उसने क्या बोला है, उसने एक तो सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं यूज़ किया है, शी लैक्स अ रीजनेबल बेसिस. बट what she has done relative to the size of each company, अगर एक कंपनी फॉर एग्जांपल छोटा है तो उसको पर शेयर $10 का रखा, कोई कंपनी उससे डबल है साइज में तो उसका $20 रख दिया विदाउट कंसिडरिंग एनी अदर फैक्टर्स. तो नंबर 1 वायोलेशन तो यहीं पे हो गया. एंड ऑल्सो उसने ऐसा बोला है टू जस्टिफाई द प्राइसिंग लेटर व्हेन द स्टाफ हैज़ टाइम. मतलब ये जस्टिफाई कभी करेंगे प्राइस $10 $20 पर शेयर व्हेन दे हैव टाइम. बेसिकली योर दे डोंट हैव टाइम, और टाइम नहीं है तो रिसर्च प्रॉपर्ली नहीं हुआ है एंड दे आर प्राइजिंग दिस आईपीओ बेस्ड ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ ईच कंपनी विच इज़ अ नॉनसेंसिकल रीज़न. तो ये ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू स्टडी ऑल द फैक्टर्स, वैल्यूएशन मॉडल्स एक्सेट्रा एंड देन कम अप विद द प्राइस. सो योर हेलन हॉक हैज़ वायोलेटेड स्टैंडर्ड 5A. Comment: Sarkozy should have taken on only the work that it could adequately handle. By categorizing the issuers by general size, Hawk has bypassed researching all the other relevant aspects that should be considered when pricing new issues, and thus has not performed sufficient due diligence. मतलब ये जो relative size है companies का वो तो सिर्फ एक factor होता है. There are various other factors when you value a stock. वो miss हो गया है. Such an omission can result in investors purchasing shares at prices that have no actual basis. Hawk has violated standard 5A. Problem 2. Babu Dhaliwal works for Heinrich Brokerage in a corporate finance group. He has just persuaded Fagans Resources Limited to allow his firm to do a secondary equity financing at Fagan Resources' current stock price. Because the stock has been trading at higher multiples than similar companies with equivalent production, Dhaliwal presses the Fagans Resources managers to project what would be the maximum production they could achieve in an optimal scenario. Based on these numbers, he is able to justify the price his firm will be asking for the secondary issue. During the sales pitch to the brokers, Dhaliwal then uses these numbers as the base case production levels that Fagans Resources will achieve.
नाउ अगेन अंडरस्टैंड द स्टोरी, क्या हुआ है। एक कंपनी है फेगान्स रिसोर्सेज। फेगान्स के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, बट फेगान्स जो है वो हायर मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर जो मल्टीपल होता है, पीई मल्टीपल हायर है, मतलब फेगान्स थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा होगा मार्केट में। अब ये जो ओवर वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई करने के लिए what he has done, he has asked the managers to project what would be the maximum production। ये रहा, मतलब प्रोडक्शन हम ज़्यादा करने वाले हैं वो दिखा के वी आर जस्टिफाइंग दिस हायर प्राइस फॉर आवर शेयर्स। लेट्स अज्यूम करंट मार्केट प्राइस इज $100। $100 है ना, ऑलरेडी ओवर वैल्यूड लग रहा है, बट उसको $100 पे ही सेकेंडरी इक्विटी फाइनेंसिंग करवाना है। सेकेंडरी इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब ही वांट्स टू रेज कैपिटल अगेन। नाउ टू जस्टिफाई $100 वो क्या बोलता है, एक प्रोजेक्शन करो ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम मैक्स प्रोडक्शन जो रहेगा दैट विल बी से 1 मिलियन यूनिट्स, कुछ भी हो सकता है इसका प्रोडक्शन, इट कैन बी चॉकलेट्स, इट कैन बी शर्ट्स, एनीथिंग। अब मैक्सिमम प्रोडक्शन 1 मिलियन यूनिट्स का होने वाला है, बट ये जो धालीवाल है उसने क्या किया है, धालीवाल सेज कि ये जो प्रोडक्शन लेवल है बेस केस प्रोडक्शन लेवल, बेस केस मतलब ही सेज कि नॉर्मली है ना, इन नॉर्मल सिनेरियो 1 मिलियन यूनिट्स का तो प्रोडक्शन इसका होता ही है। सो बेसिकली मैक्सिमम प्रोडक्शन को ये बता रहा है कि इन अ नॉर्मल केस 1 मिलियन यूनिट्स तो प्रोड्यूस होता ही है। अगेन हियर देयर इज अ वायोलेशन, मिसस्टेटिंग द एक्चुअल नंबर्स। व्हाट ही कुड हैव डन इज कि अगर इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, अगर डिमांड अच्छा है तो शायद 1 मिलियन यूनिट्स होगा, बट ऑन एन एवरेज 80,000 और यू कैन से 8 लाख यूनिट्स होगा, और इन वर्स्ट केस सिनेरियो 6 लाख यूनिट्स होगा। 6 लाख, 8 लाख एंड देन 10 लाख और 1 मिलियन, ये तीन सिनेरियो विथ प्रोबेबिलिटीज ही कुड हैव गिवन, बट मैक्सिमम यूनिट्स जो है उसको तुम बेस लेवल बता रहे हो, दैट इज अ वायोलेशन हियर। Comment: when presenting information to the brokers, Dhaliwal should have given a range of production scenarios and the probability of Fegan's resources achieving each level. By giving the maximum production level as the likely level of production, he has misrepresented the chances of achieving that production level and seriously misled the brokers. Therefore, he has violated Standard 5A. Problem 3. Brendan Witt, a former junior sell-side technology analyst, decided to return to school to earn an MBA. To keep his research skills and industry knowledge sharp, Witt accepted a position with Online and Informed, an independent internet-based research company. The position requires the publication of a recommendation and report on a different company every month. Initially, Witt is a regular contributor of new research and a participant in associated discussion boards that generally have positive comments on technology sector. Over time, his ability to manage his educational requirements and his work requirements begin to conflict with one another. Knowing a recommendation is due the next day for Online, Witt creates a report based on few news articles and what the conventional wisdom of the markets has deemed the hot security of the day. देखो सिंपल है केस, उसको एवरी मंथ कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन देना है। अब नेक्स्ट रिकमेंडेशन कल ड्यू है, उसके पास टाइम नहीं है बिकॉज वो पढ़ भी रहा है और वो काम भी कर रहा है। तो उसने क्या किया, विदाउट हैविंग एनी रीजनेबल बेसिस उसने थोड़े न्यूज़ आइटम पे और कन्वेंशनल विजडम मतलब कि जो सबसे ज़्यादा हॉट सिक्योरिटी रूमर्ड है मार्केट में उसका रिकमेंडेशन दे दिया। तो हेंस ही हैज़ वायलेटेड दिस स्टैंडर्ड। Witt's knowledge of and exuberance for technology stocks, a few news articles, and conventional wisdom of the markets do not constitute
without more information, a reasonable and adequate basis for a stock recommendation that is supported by adequate research and investigation. मतलब 2-3 न्यूज़ आइटम, 2-3 कंसेंसस ओपिनियन और तुम्हारा थोड़ा नॉलेज लगा के तुम कोई स्टॉक को रेकमेंड नहीं कर सकते. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर रीजनेबल बेसिस. Therefore, he is violated standard 5A. Also see standard 4C, responsibilities of the supervisors, because it relates to the firm's inadequate procedures. उसके supervisors के पास भी एक power था to actually check कि ये research वगैरह properly कर रहा है कि नहीं. So there the firm is also lacking. So 4C भी violate हो गया साथ में. Problem 4. Kristen Chandler is an investment consultant in the London office of Dalton Securities, a major global investment consultant firm. One of her UK pension funds has decided to appoint a specialist US equity manager. Dalton's global manager of research relies on local consultants to cover managers within their regions, and after conducting thorough due diligence, puts their views and ratings in Dalton's manager database. Chandler accesses Dalton's global manager research database and conducts a screen of all US equity managers on the basis of a match with the client's desired philosophy or style, performance, and tracking error targets. She selects the 5 managers that meet these criteria and puts them in a briefing report that is delivered to the client 10 days later. Between the time of Chandler's database search and the delivery of the report to the client, Chandler is told that Dalton has updated the database with the information that one of the firms that Chandler has recommended for consideration lost its CIO, Chief Investment Officer, the head of its equity research, and majority of its portfolio managers on the US equity product, all of whom have left to establish their own firm. Chandler does not revise her report with this updated information. First of all, understand, एक है Chandler, who is a consultant in Dalton Securities. उसको कोई तो भी एक मैनेजर हायर करना है, एंड फॉर दैट उसके डाल्टन सिक्योरिटीज़ में ही एक ग्लोबल मैनेजर है ऑफ रिसर्च हु इज़ रिलाइंग ऑन लोकल कंसल्टेंट्स. और ये जो लोकल कंसल्टेंट्स है उसका एक प्रॉपरली स्क्रीनिंग हुआ है. एवरी मैनेजर इज़ सिलेक्टेड बेस्ड ऑन सम और द अदर रीजंस. अब वैसे थोड़े थोड़े उसने मैनेजर शॉर्ट लिस्ट कर लिए एंड देन एक मैनेजर उसने रेकमेंड कर लिया. बट कोई तो भी एक मैनेजर फर्म में एक CIO, दे लॉस्ट द CIO एंड बहुत सारे लोग अलग अलग एस्टैब्लिश देयर ओन फर्म्स, मतलब अलग अलग लोग छोड़ दिए वो फर्म एंड दे स्टार्टेड देयर ओन फर्म. चैंडलर डज नॉट रिवाइज हर रिपोर्ट विद दिस अपडेटेड इन्फो. मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट दिस फर्म हु लॉस्ट इट्स CIO, हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च एंड मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये लिखना चाहिए था रिपोर्ट में, बट Chandler does not revise the report. So this is a violation of this standard. Simple. Comment: Chandler has failed to satisfy the requirement of standard 5A. Although Dalton updated the manager's rating to reflect the personnel turnover at one of the firms, Chandler did not update her report to reflect the new information. She knew about it, but she did not update the report. That is why there's a violation. Problem 5. Evelyn Mastakis is a junior analyst who has been asked by her firm to write a research report predicting the expected interest rate for residential mortgage over the next 6 months. Mastakis submits her report to the Fixed Income Investment Committee of her firm for review, as required by the firm's procedures. Although some committee members support Mastakis' conclusion, the majority of the members disagree with her conclusion, and the report is significantly changed to indicate the interest rates are likely to increase more than originally predicted by Mastakis. Should Mastakis ask that her name be taken off the report,
when it is disseminated. Now understand the question. The question says, Master Case, should she ask that her name be taken off the report? That is the question. First of all, if you remember from theory, ये the name should be taken off ये जो है उसके लिए rule क्या था? The name should be taken off is there is a proper reasoning behind that. Now understand what is happening. Let's assume there are 10 members. 10 members में से there are 6 members who say that residential mortgage का जो interest rate है that will be 11%, and there are 4 members who say कि वो rate 9.5% होगा. Now majority are agreeing on 11%, so of course they will go with the research report stating that the rate of interest will be 11%. ये जो Evelyn Mastakis है, she is amongst these 4. So the question is, should she ask that her name be taken off? मतलब के 9 लोग क्या ये report में नाम लिख के sign करेंगे या 10 के 10? That is the question. So if you remember, if the reasoning is proper, then she will have to take a call. अगर वो 6 लोगों का reasoning proper लग रहा है, then she can ask her name to be written in the report. But if she thinks कि ये जो 6 लोग हैं उनका research proper नहीं है, their reasoning is not proper, then she will have to disassociate from this report. Comment: the results of research are not always clear, and different people may have different opinions based on same factual evidence. In this case, the committee may have valid reasons for issuing the report that differs from the analyst's original research. The firm can issue a report that is different from the original report of an analyst as long as there is a reasonable and adequate basis for its conclusions. मतलब वो जो 6 लोग majority वाले हैं उनके पास proper reasoning होगा, then only they can issue such a report. Generally, analysts must write research reports that reflect their own opinion and can ask the firm not to put their name on the reports that ultimately differ from that opinion. When the work is a group effort, however, not all members of the team may agree with all aspects of the report. Ultimately, members and candidates can ask to have their names removed from the report, but if they are satisfied that the process has produced results or conclusions that have a reasonable and adequate basis, members and candidates do not have to disassociate from the report even when they do not agree with its contents. मतलब वो 6 लोग का reasoning एकदम proper है तो आप आपका नाम मत निकलवाओ, that is okay. You can still stay associated if those 6 members have a proper reasoning behind it. If Master Case is confident in the process, she does not need to disassociate from the report even if it does not reflect her opinion. मतलब जो research report approve कर रहा है, जो लिख रहा है majority वाले लोग हैं, they should have a proper reasoning. If that is true and if you still do not agree with their opinion, still it is okay, your name can be written. But if you don't agree with their reasoning, then only you have to disassociate from the report. Problem 6. Gary McDermott runs a 2-person investment management firm. McDermott's firm subscribes to a service from a large investment research firm that provides research reports. McDermott's firm makes investment recommendations on the basis of these reports. See, this is third-party research or external advisor. Here, they cannot make investment recommendations blindly. They have to study, first of all, the quality of these reports and then disseminate any recommendation ahead. Comment: members and candidates can rely on third-party research but must make reasonable and diligent efforts to determine that such report or such research report is sound. If McDermott undertakes due diligence efforts on a regular basis to ensure that the research produced by the large firm is objective and reasonably based, McDermott can rely on the research when making investment recommendations to the clients. मतलब अगर वो due diligence proper रख रहा है, checking the quality of the reports of third party, then only he can recommend it to the clients ahead, वरना वो violation हो जाएगा. Problem 7. Paul Ostrowski's business has grown significantly over the past couple of years.
and some clients want to diversify internationally. Ostrowski decides to find a sub-manager to handle the expected international investments. Because this will be his first sub-advisor, Ostrowski uses the CFA Institute model request for proposal to design the questionnaire for his research. By his deadline, he receives 7 completed questionnaires from a variety of domestic and international firms trying to gain his business. Ostrowski reviews all the applications in detail and decides to select the firm that charges the lowest fees, because doing so will have the least impact on the firm's bottom line. अंडरस्टैंड द स्टोरी. ये पॉल ऑस्ट्रॉस्की है. पॉल ऑस्ट्रॉस्की ने एक सब मैनेजर हायर करना है. सब मैनेजर बेसिकली, अगर पॉल मैनेजर है तो एक सब मैनेजर क्या करेगा, he will actually manage the money of the clients on behalf of Paul. अब ऑफ कोर्स पॉल अगर सब मैनेजर को हायर कर रहा है तो उसको कुछ तो भी पैसा देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा. सो व्हाट ही हैज़ डन, CFA इंस्टीट्यूट मॉडल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मतलब एक क्वेश्चनर होता है, यू हैव टू फिल इट एंड देन यू कैन सिलेक्ट द सब मैनेजर. अब उसने क्या किया, लीस्ट अमाउंट ऑफ फीस जो ले रहा है ना सब मैनेजर, उसको हायर कर लिया, सो दैट फर्म का बॉटम लाइन, मतलब कि ये जो पॉल है इसका बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट. FRA में अपन ने पढ़ा है बॉटम लाइन मतलब लास्ट लाइन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट विच इज़ नथिंग बट नेट प्रॉफिट या नेट इनकम. ये जो नेट इनकम है उस पर अफेक्ट ना हो, दैट इज़ वाई ही हैज़ चोजन द लीस्ट फी चार्जिंग मैनेजर. तो अगेन दिस इज़ अ वायोलेशन बिकॉज ही हैज़ टू चेक कि ये जो सब मैनेजर है वो अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छा है या नहीं. ही शुड मेक क्वालिटी चेक्स, ही शुड डू द ड्यू डिलिजेंस. सस्ता वाला है इसके लिए वो चूज़ किया, दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर रीजनिंग बिहाइंड इट. Comment: the selection of an external advisor or a sub-advisor should be based on full and complete review of the advisor's services, performance history and cost structure. मतलब ये तीनों को देख के चूज करना है. In basing the decision on the fee structure alone, Ostrowski may be violating standard 5A. Also see standard 3C, suitability, because it relates to the ability of the selected advisor to meet the needs of the clients. मतलब शायद clients के लिए भी वो proper नहीं हो, वो least cost वाला है, तो quite possible he might be compromising on the quality. So 3C as well as this standard have been violated. Problem 8. Michael Puppies is a chief investment officer of his state's retirement fund. The fund has always used outside advisors for real estate allocation, and this information is clearly presented in all the fund's communications. Thomas Nagle, a recognized sell-side research analyst and Pappy's business school classmate, recently left the investment bank he worked for to start his own asset management firm known as Accessible Real Estate. ये पापिस जो है वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है और उसका ही एक फ्रेंड है थॉमस नागले जिसने एक्सेसिबल रियल एस्टेट एक फर्म शुरू किया है. नागले इज ट्राइंग टू बिल्ड हिज AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एंड कॉन्टैक्ट्स पापिस अबाउट गेनिंग सम ऑफ द रिटायरमेंट फंड्स एलोकेशन. मतलब पापिस के अंडर जो रिटायरमेंट फंड्स है जिसका पैसा रियल एस्टेट में डालना है, फॉर दैट ही विल कॉन्टैक्ट थॉमस नागले. In the previous few years, the performance of the retirement funds' real estate investments was in line with the fund's benchmark, but was not extraordinary. Papis decides to help out his old friend and also to seek better returns by moving real estate allocations to Accessible. Accessible Real Estate मतलब उसके friend का company. The only notice of the change in advisor appears in the next annual report इन लिस्टिंग ऑफ एसोसिएटेड एडवाइजर्स. ये जो एडवाइज़र चेंज किया है उसको तुमको अपने क्लाइंट्स को भी बताना पड़ेगा दैट वी हैव चेंज द एडवाइज़र और द सब एडवाइज़र. सो उसका जो एनुअल रिपोर्ट आएगा नेक्स्ट ईयर, उसमें ये जो चेंज हुआ है वो पता चलेगा. सो फर्स्टली
ये अपने फ्रेंड है, फ्रेंड का ही कंपनी है, दैट इज़ वाई आई हैव चोजन दिस एडवाइज़र फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, इज़ नॉट एट ऑल डिलिजेंट एंड अ रीजनेबल बेसिस. सो 5A यहाँ पर वायोलेट हो चुका है. ऑल्सो आगे जाके हम स्टैंडर्ड 5B पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेशन टू क्लाइंट्स. यहाँ पर ये नेक्स्ट रिपोर्ट में सीधा सीधा ये जो चेंज हुआ एडवाइज़र का वो नोटिफिकेशन मिलेगा क्लाइंट्स को इन द नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट. तो अगेन 5B हैज़ बीन वायोलेटेड. ऑल्सो इसके साथ साथ स्टैंडर्ड 6A हैज़ ऑल्सो बीन वायोलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तुमने अपने ही फ्रेंड के फर्म को ये दे दिया है इन्वेस्टमेंट, सो दैट इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट. तुम दोनों में शायद कोई अग्रीमेंट हो सकता है वैसा, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू डिस्क्लोज. कॉमेंट, Papis violated standard 5A. His responsibilities may include the selection of external advisors, but the decision to change advisors appears to have been arbitrary. If Papis was dissatisfied with the current real estate advisor, he should have conducted a proper solicitation to select the most appropriate advisor. मतलब कोई भी आलतू फालतू एडवाइजर शायद उसने चूज कर लिया होगा just because he is his friend. So 5A violate हो गया. Then 5B, communication with clients also has been violated. And 6A, disclosure of conflict has also been violated. We have covered this example in all these three standards, so you will come across this example thrice, but it's okay. Problem 9. Andre Shrub owns and operates Conduit, an investment advisory firm. Prior to opening Conduit, Shrub was an account manager with Elite Investment, a hedge fund managed by his good friend Adam Reed. ये पहले Elite Investment में काम करता था. Now he is operating Conduit. To attract new clients to a new Conduit fund, Shrub offers lower than normal fees. Management fees या fees, any kind of fees, but market से थोड़ा कम fees charge करेगा. He can do so because the fund consists of 2 top performing funds managed by Reed. श्रब जो है उसमें से उसने जो इन्वेस्टमेंट रखा है फंड्स का, उसमें से 2 टॉप परफॉर्मिंग फंड्स जो हैं दीज आर मैनेज्ड बाय रीड. रीड कौन है? रीड इज हिज फ्रेंड हु इज मैनेजिंग द हेज फंड नोन एज एलीट इन्वेस्टमेंट. ओके, लेट्स रीड अहेड. Given his personal friendship with Reed and prior performance record of these two funds, Shrub believes that his new fund is a winning combination for all the parties. Clients quickly invest with Conduit to gain access to Elite's funds. No one is turned away because Conduit is seeking to expand its AUM, assets under management. Try to understand the whole story. Shrub operates Conduit and उसका ही एक friend, prior to opening Conduit, he was an account manager with Elite Investment, which is an hedge fund managed by his friend Reed, Adam Reed. What is happening actually, ये जब भी Conduit Investment Advisory Firm open किया तभी उसके पास 2 top performing funds है which are managed by his friend. तो what he does, एक नॉमिनल एकदम छोटा फीस रखता है, सम स्मॉल परसेंटेज ऑफ फीस, सो दैट क्लाइंट्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज एडवाइजरी सर्विस एंड ही एडवाइजेज देम टू इन्वेस्ट इन एलीट. और वो एलीट में सबको एलोकेशन दिलवाता है एंड नो क्लाइंट इज टर्न्ड अवे. मतलब हर एक क्लाइंट का पैसा उसने ले लिया एंड इज इन्वेस्टिंग इट इन एलीट फंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल 5A यहाँ पर वायोलेट हो चुका है बिकॉज देर इज़ नो रीजनेबल बेसिस कि ये एलीट फंड को क्यों चूज़ किया. यू जस्ट बिकॉज इज योर फ्रेंड और योर पास्ट एम्प्लॉयर, बिकॉज यू वर एन अकाउंट मैनेजर देयर, दैट डज नॉट मीन कि ये फंड आपके क्लाइंट्स के लिए बेटर होगा. सो यू नीड टू मेक अ प्रॉपर रिसर्च, नंबर 1. एंड नंबर 2, दिस माइट नॉट बी सूटेबल फॉर योर क्लाइंट्स. इफ़ यू रिमेंबर स्टैंडर्ड 3C, यहाँ पर 3C भी अफेक्ट हो चुका है because it might not be suitable for all your clients. So you are not turning down anyone away, and that is why 3C has also been violated. Comment, Shrub violated standard 5A by not conducting a thorough analysis of the funds managed by Reed
before developing the new conduit fund. Schrubb's reliance on his personal relationship with Reed and his prior knowledge of elite are insufficient justification for investments. The funds may be appropriately considered, but a full review of their operating procedures, reporting practices, transparency are some elements of the necessary due diligence. मतलब ये सब factors भी देखने चाहिए थे. Also see standard 3C suitability. It might not be suitable for all the clients, तो वो भी check करना पड़ेगा. Problem 10. Bob Thompson has been doing research for the portfolio manager of fixed income department. His assignment is to do sensitivity analysis on securitized subprime mortgages. He has discussed with the manager possible scenarios to use to calculate expected returns. A key assumption in such calculations is housing price appreciation HPA, because it drives prepays, which is prepayments of mortgages, and losses. Thompson is concerned with the significant appreciation experienced over the previous 5 years and as a result of increased availability of funds from subprime mortgages. Thompson insists that the analysis should include a scenario run with minus 10% for year 1, minus 5% for year 2, and then to project the worst case scenario 0% for years 3 through 5. The manager replies that these assumptions are too dire because there has never been a time in their available database when HPA was negative. Thompson conducts his research to understand the risk inherent in these securities and evaluates these securities in the worst case scenario, a less likely but possible environment. Based on the results of the enhanced scenarios, Thompson does not recommend the purchase of the securitization. Against the general market trends, the manager follows Thompson's recommendation and does not invest. The following year, housing market collapses. In avoiding the subprime investments, the manager's portfolio outperforms its peer group that year. Understand the story. Thompson ने क्या किया है? First of all, this question is talking about securitized subprime mortgages. If you have not studied fixed income as of now, no need to worry, ये उसका concept है. I'll give you a brief. ऐसा कुछ होता है, एक borrower है, एक होता है बैंक, एक स्पेसिफिक पर्पस एंटिटी होता है और होते हैं इन्वेस्टर्स. अब होता क्या है, ये जो बोरोवर है उसने बैंक से लोन लिया है और सामने उसका एक प्रॉपर्टी गिरवी रखा है. बट ये जो बोरोवर है उसका क्रेडिट क्वालिटी जो है ना वो बहुत लो है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट शायद ज़्यादा कर सकता है. क्रेडिट क्वालिटी उसका थोड़ा लो है. उसने घर गिरवी रख के बैंक से लोन ले लिया. नाउ बैंक इज़ वरीड कि इसका क्रेडिट क्वालिटी लो है, ही माइट डिफ़ॉल्ट ऑन द लोन. और बैंक को क्या है, अभी के अभी पैसा चाहिए, तो बैंक उतना ही पैसा एक SPE से मांग लेती है. SPE स्पेसिफिक पर्पस एंटिटी जो है वो यही काम के लिए फॉर्म हुआ है. बैंक गेट्स इट्स मनी एंड अभी SPE ने बैंक को दे दिया. बैंक क्या करता है, सामने ये जो लोन है वो अभी SPE को दे देता है. जो रिसीवेबल अमाउंट है, बोरोवर जो रीपे करेगा अभी वो SPE को रीपे करेगा. एंड दिस मॉर्गेज जो हाउस प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया है वो भी अभी SPE का हो जाएगा. सो इन केस द बोरोवर डिफॉल्ट्स, दिस हाउस कैन बी सोल्ड बाय SPE. फ्रॉम वेयर विल SPE गेट द फंड्स? फ्रॉम इन्वेस्टर्स. वो मार्केट में इन्वेस्टर्स से पैसा रेस करता है एंड इन रिटर्न इशूज मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज. पीछे मॉर्गेज बैकिंग में है ये लोन, दिस नोन एज मॉर्गेज. तो ये मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ है.
ये इन्वेस्टर्स को उसने इशू कर दिया। ऑलराइट, एनीवे लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स। अब ये जो मॉर्गेजेस सेल हो रहे हैं, दी सिक्योरिटाइज्ड सबप्राइम मॉर्गेजेस या मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़, उसके लिए कुछ तो भी एनालिसिस किया है, जिसके लिए HPA हाउसिंग प्राइस अप्रिसिएशन इंडेक्स उसने यूज़ किया है। अब हाउसिंग प्राइस जो है नॉर्मली इंक्रीज होता रहता है ओवर द लॉन्ग टर्म, बट ये बोलता है कि हमको एक नेगेटिव केस या वर्स्ट केस सिनेरियो भी ले लेना चाहिए, फॉर विच एक साल में लेट्स अज्यूम -10%, मतलब कि प्राइजेस विल फॉल। फिर वो बोलता है लेट्स अज्यूम नेक्स्ट ईयर में 5% से फॉल होगा, उसके बाद 0% हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट ही सेज। एंड ये जो वर्स्ट केस सिनेरियो उसने लिया है, उसके वजह से उसको फ़ायदा क्या हुआ कि उसने बोला कि ये सिक्योरिटाइज्ड जो मिल रहा है एसेट, वो बाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज एज पर हिज कैलकुलेशन द हाउसिंग प्राइजेस विल बी फॉलिंग। तो ये जो सिक्योरिटीज़ वगैरह है शायद उसमें लॉसेस हो सकता है। एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। उसने जिसको बोला ये बाय नहीं करना है, उसने बाय नहीं किया एंड उसका पोर्टफोलियो जो है वो बच गया लॉसेस से। दिस इज़ व्हाट हैपेंड। सो डेफिनेटली आई डोंट सी एनी वायोलेशन हियर। दिस इज एब्सोल्युटली व्हाट ही शुड हैव डन। कमेंट: Thompson's actions in running the scenario test with inputs beyond historical trends available in the firm's database adhere to principles of standard 5A. मतलब there is no violation. His concerns over recent trends provide a sound basis for further analysis. Thompson understands the limitation of his model when combined with the limited available historical info to accurately predict the performance of the funds if market conditions change negatively. मतलब उसने सही किया है, not just historical trends but also some forecast of negative scenarios has actually saved someone's money. So this is a good deal. He has not violated any standard. Problem 11. Aspasia Liakos works in sales for Hellenica Securities, a firm specializing in developing intricate derivative strategies to profit from particular views on market expectations. One of our clients is Eugene Karapolis, who has become convinced that commodity prices will become more volatile over the coming months. Karapolis asks Liakos to quickly engineer a strategy that will benefit from this expectation. Liakos turns to Hellenica's modeling group to fulfill this request. Because of the tight deadline, the modeling group outsources parts of several work to several trusted third parties. Liakos implements the disparate components of the strategy as the firms complete them. क्या हुआ है यहाँ पे, किसी ने बोला है कि कमोडिटी प्राइसेस वॉलेटाइल होने वाला है, तो मुझे एक डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी चाहिए इमीडिएटली, लाइक विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अ टाइट डेडलाइन. फॉर दैट दे हैव आउटसोर्स्ड दिस वर्क टू सेवरल ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज एंड हर एक थर्ड पार्टी को थोड़ा थोड़ा काम दे के एक स्ट्रैटेजी बना लिया है. विद इन अ मंथ Karapolis is proven correct. Volatility across a range of commodities increases sharply. अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड. अभी तक क्या हुआ था, कैरापोलिस ने बोला कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने वाला है. फॉर दैट योर फर्म हैज़ कंसल्टेड वेरियस थर्ड पार्टीज. लेट्स अज्यूम देर आर 4 थर्ड पार्टीज. एक पार्टी ने तुमको एक स्ट्रैटेजी बताया, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस स्ट्रैटेजी, कॉल पुट वगैरह के लिए. एक पार्टी ने इंटरेस्ट रेट पे एक स्ट्रैटेजी बनाया. एक पार्टी ने लेट्स से जीडीपी फोरकास्ट को लेके एक स्ट्रैटेजी बनाया. एक पार्टी ने कमोडिटी हिस्टोरिकल प्राइसेस देख के एक स्ट्रैटेजी बनाया. लेट्स जस्ट अज्यूम चारों ने कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तुमको बना के दे दिया. नाउ लेट्स रीड अहेड. तो Karapolis is proven correct कि volatility तो हो गया, but her derivatives position with Hellenica returns huge losses.
and the losses increase daily. ये strategies ले लिए चारों third party से, but फिर loss हो गया. Liakos investigates and realizes that although each of the various components of the strategy had been validated, they had never been evaluated as an integrated whole. In extreme conditions, portion of the models worked at cross purposes with each other or with other proportions or portions, causing the overall strategy to fail dramatically. See what has happened. चार पार्टी ने चार स्ट्रैटेजी बना के दिया. फर्स्ट स्ट्रैटेजी अच्छा है, सेकंड अच्छा है, थर्ड अच्छा है, फोर्थ अच्छा है. ये इंडिविजुअली वैलिडेट हो गया. बट when these four are used or when it is combined and integrated as one strategy, वो validate नहीं किया. So quite possible using these four can lead to opposite reactions. If you use strategy 1, you might earn profit. But if you are using strategy 1 as well as 2, quite possible you might make a loss. तो ये जब भी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजीज का स्टडी करना था वो उसने वैलिडेट नहीं किया. दैट इज़ वाई स्टैंडर्ड 5A हैज़ बीन वायोलेटेड हियर. Comment: Liakos violated standard 5A. Members and candidates must understand the statistical significance of results of models they recommend and must be able to explain them to the clients. Liakos did not take adequate care to ensure a thorough review of the whole model. Its components were evaluated only individually. Because Carapolis clearly intended to implement the strategy as a whole rather than separate parts, Liakos should have tested how components of the strategy interacted as well as how they performed individually. तो अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो यू नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स, जस्ट अंडरस्टैंड इफ देयर आर 4 पार्ट्स इन अ स्ट्रैटेजी, चारों को इंडिविजुअली टेस्ट करो एज वेल एज इन अ कॉम्बिनेशन. सो हियर देयर विल बी अ वायोलेशन बिकॉज कॉम्बिनेशन में टेस्ट नहीं किया था. प्रॉब्लम 12. Alton Newberry is an investment advisor to high net worth clients. A client with an aggressive risk profile in his investment policy statement asks about investing in the top shelf hedge fund. This fund, based in Calgary, Alberta, in Canada, has reported 20% returns for the first 3 years. The fund prospectus states that its strategy involves long and short positions in the energy sector and extensive leverage. Based on his analysis of the fund's track record, the principles involved in managing the fund, the fees charged, and the fund's risk profile, Newberry recommends the fund to the client and secures a position in it. The next week, the fund announces that it has suffered a loss of 60% of its value and is suspending operations and redemptions until after a regulatory review. Newberry's clients calls him in a panic and asks for an explanation. First of all, let's not jump to conclusions. ये देख के लग रहा है कि 5A वायोलेट हुआ है, but I'll prove you wrong. Let's understand. ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ 4 चीज़. पहला, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ फंड्स ट्रैक रिकॉर्ड, ये हेज फंड का ट्रैक रिकॉर्ड एनालाइज किया है. द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन मैनेजिंग, मतलब कौन मैनेजर है उसको हमने एनालाइज किया है. द फीस चार्ज्ड बाय इट, द फंड्स रिस्क प्रोफाइल. डोंट यू थिंक these 4 constitute a proper reasonable basis to actually recommend this fund to your clients? तुमने properly recommend किया है, so don't worry, 5A has not been violated. अगर loss हो भी गया तो क्या? There is no guarantee, right? In these investments, the risk has to be borne by the client. So you have done your proper research. Now hedge fund has delivered a loss that is not your concern. You have not violated standard 5A. Comment: Newberry's actions were consistent with standard 5A. Analysis of an investment that results in a reasonable basis for recommendation does not guarantee that the investment has no downside risk. Newberry should discuss the analysis process with the client while reminding him or her
that past performance does not lead to guaranteed future gains, and that losses in an aggressive investment portfolio should be expected. तो क्लाइंट को तुम प्रिपेयर करके ही रखना दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन अ हेज फंड जिसमें लॉसेस हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स पास्ट कैन नॉट रिपीट अगेन. पास्ट में प्रॉफिट हुआ तो शायद अभी लॉस भी हो सकता है, सो देयर इज नो वायोलेशन हियर. Problem 13. Barry Cannon is the lead quantitative analyst at City Center Hedge Fund. He is responsible for the development, maintenance, and enhancement of the proprietary models the fund uses to manage its investors' assets. Cannon reads several high-level mathematical publications and blogs to stay informed of current developments. One blog run by Expert CFA, एक ब्लॉगर का नाम होगा Expert CFA, presents some intriguing research that may benefit one of its current models. Cannon is under pressure from firm executives to improve the model's predictive abilities, and he incorporates the factors discussed in the online research. The updated output recommends several new investments to the fund's portfolio managers. First of all, क्या हुआ है, तुमको कुछ तो भी ऐसा इम्प्रूवमेंट चाहिए इन योर एग्जिस्टिंग मॉडल. फॉर दैट what you have done, you have incorporated some factors which you found online, and online ब्लॉगर का नाम क्या है, एक्सपर्ट CFA. ये एक्सपर्ट CFA सिर्फ नाम है. Quite possible he is not an expert because online you cannot rely कि सामने वाला actually expert है या नहीं, या actually CFA है या नहीं. So first of all, ये जो भी उसने फैक्टर्स सीधा सीधा ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट किया है, देयर हैज़ बीन अ वायोलेशन ऑफ स्टैंडर्ड 5A. एंड ऑल्सो यू विल रीड अहेड, स्टैंडर्ड 7B भी वायोलेट हुआ है बिकॉज नो वन कैन एक्चुअली हाइड देयर आइडेंटिटी. ये जो एक्सपर्ट CFA लिखा है ना, दैट इज़ नॉट अलाउड. सोशल मीडिया पे और एनीवेयर एल्स यू हैव टू राइट योर नेम कॉमा CFA इफ़ यू आर अ चार्टर होल्डर. अगर तुम ये आइडेंटिटी हाइड करके ऐसे ही लिख रहे हो एक्सपर्ट CFA, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि किसी ने CFA किया भी नहीं होगा, स्टिल ही इज़ पोस्टिंग समथिंग एक्टिंग लाइक अ CFA. सो दो वायोलेशन हो गया है, 5A एंड 7B. वी विल कवर दिस एग्जाम्पल इन 7B अगेन. Comment: Canon has violated standard 5A by failing to have a reasonable basis for the new recommendations made to portfolio managers. He needed to diligently research the effect of incorporating the new factors before offering the output recommendations. Canon may use the blog for ideas, but it is his responsibility to determine the effect on the firm's proprietary models. मतलब वो factors उसको use करना है तो करे, but first study those factors, due diligence करो, have a reasonable basis, and then blindly you can recommend it to your managers. Also see standard 7B, because ये expert CFA use नहीं कर सकते नाम. You have to write your name, like for example ये हो गया Kevin Haria, comma CFA. ऐसा लिखना होता है. You cannot write expert CFA because you are hiding your identity. तो 7B भी violate हो जाएगा. Problem 14. Ellen Smith is a performance analyst at Arctic Global Advisors, a firm that manages global equity mandates for institutional clients. She was asked by her supervisor to review 5 new performance attribution systems and recommend one that would more appropriately explain the firm's investment strategy to the clients. On the list was a system she recalled learning about when visiting an exhibitor booth at a recent conference. The system is highly quantitative and something of a black box in how it calculates the attribution values. Smith recommended this option without researching the others because the sheer complexity of the process was sure to impress the clients. First of all, you need not know what is performance attribution system, you need not know what is black box, quantitative model, etc. जो भी है, that is out of your curriculum. Anyway, without researching, she has recommended something to
someone. So इधर violation हो गया है automatic. Comment: Smith's action do not demonstrate a sufficient level of diligence in reviewing this product to make a recommendation for selecting the service. Besides not reviewing or considering the other 4 potential systems, she did not determine whether the black box attribution process aligns with the investment practices of the firm, including its investments in different countries and currencies. Smith must review and understand the process of any software or system before recommending its use as the firm's attribution system. In short, ये blindly तुमको use नहीं करना है. Understand, study that first and try to make a reasonable basis and then only recommend anything to anyone. Problem 15. Craig Jackson is working for Adams Partners Inc. and has been assigned to select a hedge fund sub-advisor to improve the diversification of firm's large fund of funds product. Fund of fund मतलब एक hedge fund दूसरे hedge fund में पैसा डालता है. The allocation must be in place before the start of the next quarter. Jackson uses a consultant database to find a list of suitable firms that claim compliance with the GIPA standards, Global Investment Performance Standards, which is our next topic in ethics. He calls more than 20 firms on the list to confirm their potential interest and to determine their most recent quarterly and annual total return values. Because of the short turnaround, Jackson recommends the firm with the greatest total return values for selection. First of all, ये GIPS का मतलब है whenever you are showing your performance to someone, there are specific standards. How do you present your performance? तो इसने 20 firms जो है उसको कॉल किया एंड उसको सिलेक्ट करना है कोई भी एक. तो उसने किसको सिलेक्ट किया जिसमें हाईएस्ट रिटर्न दिखा उसको. अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेज फंड को तुमने चूज किया है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट रिटर्न. जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न लाया उसको तुमने सिलेक्ट कर लिया. अगेन 5A वायोलेट हुआ है बिकॉज यू कैनॉट ब्लाइंडली सिलेक्ट एनीथिंग. यू नीड टू स्टडी द होल हेज फंड. क्या पता शायद लास्ट ईयर में उसको प्रॉफिट आया है बट उसके पहले 10 साल लॉसेस था. और यू नेवर नो द मैनेजर ऑफ दैट हेज फंड, यू कांट रियली ट्रस्ट ऑन दैट. और हेज फंड का क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज है वगैरह वो डिस्क्लोज नहीं करता, रिपोर्टिंग नहीं करता, ट्रांसपेरेंट नहीं है. देयर कैन बी मेनी अदर फैक्टर्स. सो योर देयर इज अ वायोलेशन ऑफ स्टैंडर्ड 5A. Comment: By considering only performance and GIPS compliance, Jackson has not conducted sufficient review of potential firms to satisfy the requirements of Standard 5A. A thorough investigation of firms and their operations could be conducted to ensure that their addition would increase the diversity of clients' portfolios and that they are suitable for fund of funds product. तो proper research करना चाहिए था, not just based on one factor or 2 factors. Problem 16. Timothy Green works for Peach Asset Management, where he creates proprietary models that analyze data from the firm request for proposal questionnaires to identify managers for possible inclusion in the firm's fund of funds investment platform. Various criteria must be met to be accepted to the platform. Because the number of respondents to the questionnaires, Green uses only data submitted to make a recommendation for adding a new manager. This is very easy. Understand what has happened. ये जो क्वेश्चनर होता है इट इज़ नथिंग बट लाइक अ सर्वे फॉर्म. यू फिल दिस क्वेश्चनर. अब इसमें क्या क्या पूछेंगे तो मैनेजर्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं दे विल राइट देयर नेम, लेट्स से एज, पास्ट परफॉर्मेंस. They may write the name of their employer, or if they have their own firm they can write that, etc etc. So basically the question is going to be quite long. And also
बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, बहुत सारे रिस्पॉन्डेंट्स थे ये क्वेश्चनर को फिल करने वाले, ग्रीन यूजेज ओनली द डेटा सबमिटेड टू मेक अ रिकमेंडेशन फॉर एडिंग अ न्यू मैनेजर. इन शॉर्ट, ये जो भी डेटा मैनेजर्स ने सबमिट किया थ्रू अ क्वेश्चनर, यू आर यूजिंग दैट डेटा एंड recommending one manager. Simple as that. There is a violation here definitely, because ये past performance जो है, या ये जो employer है, या age है, या even the name जो है, did you actually verify? No. Based on the details submitted or the data submitted, you chose a manager. अरे कम से कम verify तो करते. At least know that every detail written here is honest and correct. वरना किसी ने मस्ती किया रहेगा, किसी ने ऐसे ही परफॉर्मेंस में लिख दिया रहेगा 500% रिटर्न्स लास्ट ईयर. नाउ यू शुड चेक इट फर्स्ट. तो here you have not been diligent and you are not adequately providing any recommendation of managers, so this will be a violation. Comment: by failing to conduct any additional outside review of the information to verify what was submitted through the request for proposal, green has likely not satisfied the requirements of standard 5A. The amount of information requested from outside managers varies amongst firms. Although the requested information may be comprehensive, green should ensure sufficient effort is undertaken to verify the submitted information before recommending a firm for inclusion. This requires that he go beyond the information provided by the manager on the request for proposal questionnaire and may include interviews with interested managers, reviews of regulatory filings, and discussions with the manager's custodian or auditor. क्या क्या करना चाहिए था? इंटरव्यू ले लो मैनेजर का पहले, रिव्यू कर लो कोई रेगुलेटरी फाइलिंग्स वगैरह होगा तो, एंड डिस्कशंस विद मैनेजर्स कस्टोडियन और ऑडिटर और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, किसी से तो बात करके वेरीफाई करते. बट योर by failing to do that, standard 5A has been violated. Problem 17. Jerome Dupont works for the credit research group of XYZ Asset Management, where he is in charge of developing and updating credit risk models. In order to perform accurately, his models need to be regularly updated with the latest market data. Dupont does not interact with or manage money for any of the firm's clients. He is in contact with firm's US corporate bond manager, John Smith, who has only very superficial knowledge of the model and who from time to time asks very basic questions regarding the output recommendations. Smith does not consult Dupont with respect to finalizing his client's investment strategies. The development of such a model is a critical step in the process. Because Smith seems to follow the model's recommendations without much concern for its quality as he develops his client's investment strategies, Dupont decides to focus his time on development of new emerging market model and neglects to update the US model. After several months without regular updates, Dupont's diagnostic statistics start to show alarming signs with respect to the quality of the US credit model. Instead of conducting the long and complicated data update, Dupont introduces new codes into the model with some limited new data as a quick fix. He thinks this change will address the issue without needing to complete the full data update. So he continues working on the new emerging market model. Several months following the quick fix, another set of diagnostic statistics reveals nonsensical results, and Dupont realizes that his earlier change contained an error. He quickly corrects the error and alerts Smith. Smith realizes that some of the prior trades he performed were due to the erroneous model results. Smith rebalances the portfolio to remove the securities purchased on the basis of questionable results without reporting the issue to anyone else.
फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज क्वाइट लॉन्ग, सो डोंट वरी, एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चंस नहीं एक्सपेक्टेड है आपसे, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट इन टू पार्ट्स. एक था स्मिथ और एक है डुपॉन्ट. स्मिथ ने एक वायोलेशन किया है, इफ़ यू हैव नोटिस्ड. उसने ब्लाइंडली वो मॉडल यूज़ कर दिया और अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर दिया. उसको कुछ समझता ही नहीं था टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जस्ट ही इज़ ट्रस्टिंग द मेकर ऑफ दिस मॉडल एंड ही यूज द मॉडल ब्लाइंडली. तो पहले तो इधर वायोलेशन हो गया है 5A का. लेट्स कम टू डुपॉन्ट. डुपॉन्ट के पास दो मॉडल्स हैं, एक था US मॉडल और एक था इमर्जिंग मार्केट मॉडल. He was working on US model earlier. Now he is trying to make emerging market model. अब ये मॉडल्स वगैरह क्या होता है, डोंट गो इनटू टेक्निकलिटीज. अंडरस्टैंड दीज आर सम क्वांटिटेटिव मॉडल्स जो कंप्यूटराइज्ड होता है. यू हैव टू पुट सम इनपुट्स इन इट एंड देन इट विल गिव यू एन आउटपुट. ओके, अब ये जो इमर्जिंग मार्केट मॉडल था वो नया नया बनाना था, बट पीछे एक US मार्केट मॉडल भी था. There was something to be updated in the US market model which he did not update. अगर अपडेट नहीं किया तो प्रॉब्लम होता है. एंड देन ही मेड सम फिक्सेस, एक छोटा सा कोड उसने चेंज किया एंड ही फिक्स्ड दैट मॉडल. बट अगेन वो जो फिक्स किया वो एरोनियस था, एंड एरोनियस था इसके लिए उसने उसको वापस फिक्स कर दिया. ऑलराइट, दिस इज व्हाट ही डिड विद द US मार्केट मॉडल विच इज़ एब्सोल्युटली अ वायोलेशन. विदाउट एनी बेसिस उसने खाली एक क्विक फिक्स डाल दिया. ही इज़ ट्राइंग टू डिले इट, ही इज़ नॉट अपडेटिंग इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड ऑल्सो देन स्मिथ जो है उसने ये रॉन्ग जो फिक्स किया था उसने डुपॉन्ट ने, उसके बेसिस पे कुछ तो भी ट्रेड्स कर लिया. जो एरोनियस मॉडल के बेसिस पे ट्रेड किया उसमें भी लॉस हो सकता है. सो टू कवर दैट ही हैज़ रीबैलेंस द पोर्टफोलियो अगेन ब्लाइंडली. सीधा सीधा जो उसने पोजीशन लिया होगा वो उसने ऑपोजिट पोजीशन ले लिया होगा विदाउट रिपोर्टिंग दिस इशू टू एनीवन एल्स. बोथ हैव वायोलेटेड दिस स्टैंडर्ड. कमेंट. पहले स्मिथ का बात करते हैं. स्मिथ वायोलेटेड स्टैंडर्ड 5A because exercising diligence, independence and thoroughness in analyzing investments, making investment recommendations and taking investment actions means that members and candidates must understand the technical aspects of the products they provide to the clients. Smith does not understand the model he is relying on to manage the money. Members and candidates should make reasonable inquiries into the source and accuracy of all data used in completing their investment analysis and recommendations. ये मॉडल को समझता ही नहीं था, टेक्निकलिटीज नहीं पता थी, still he used it, that is why he has violated. Now let's talk about Dupont. Dupont violated standard 5A even if he does not trade securities or make investment decisions. Dupont's models give investment recommendations, and Dupont is accountable for the quality of those recommendations. Members and candidates should make reasonable efforts to test the output of pre-programmed analytical tools they use. Such validation should occur before incorporating the tools into their decision making process. मतलब वो जो क्विक फिक्स किया ना उसके बाद पता चला लॉस हो गया, उसके बाद उसने उसको वापस फिक्स कर दिया. तो whenever you are fixing something उसका इफेक्ट जो है वो पहले से ही तुम प्रिडिक्ट कर लो instead of waiting for actual thing to happen. Also see standard 5B कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. तो ये जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह चेंज किया है ना, एंड में लास्ट लाइन में लिखा था ही डिड नॉट इन्फॉर्म एनीवन एल्स. यू हैव टू इन्फॉर्म योर क्लाइंट रिगार्डिंग एनी चेंज इन द स्ट्रेटेजी ऑल्सो. Thank you guys for watching this video. Stay tuned to Ekeeda and subscribe to Ekeeda.